औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Aamir Mairaj and you are watching Concept Coaching. Viewers, ये लेक्चर नंबर 58 है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का क्लास 10 का मैथमेटिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन ये है कि जी find the value of k if sum of the roots of the equation 2kx square minus 3x plus 4k equal to 0 is twice the product of roots। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं, let alpha and beta are the roots of the given equation. Then sum of the roots this equal to alpha plus beta equal to, तो अल्फा बीटा हमने रूट्स सपोज किए। अल्फा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी ओवर ए। व्हाट इज बी? इक्वेशन में जो बी है माइनस बी की वैल्यू है 3। एक्स के साथ जो लिखा हुआ है, ये एक्स के साथ जो लिखा है दिस इज बी, सो 3 ओवर ए की वैल्यू है 2k, दिस इज 2k, so this is the sum of the roots. Now product of roots product of roots of roots is equals to alpha beta and this equal to c over a. What is c? So in the equation what is c? c की वैल्यू है 4k और a की वैल्यू 2k। जो कांस्टेंट होता है वो c की वैल्यू है, तो दिस इज 4k over 2k. So k should be cancelled. 2 cancel हो जाएगा, this is 2. So as per condition of the question, as per condition of the question as per condition of the question, what is the condition of the question? That sum of the roots is equals to twice the product of roots. This is the condition of the question. Sum of the roots alpha plus beta, this equal to twice the product of roots. So ये देख लें जरा, कोई कंडीशन लिखी हुई है that the sum of the roots, ये आप देख लें, sum of the roots and is twice the product of the roots. So हमने कंडीशन लगा दी, sum of the roots is equals to twice the product of the roots. This is the condition. So what is the sum of the roots? We have calculated that minus 3 over 2k.
This is the sum of the roots. So we will put the values. Put the values, we get sum of the roots. That sum of the roots is minus 3 over 2k, and this equal to 2, and the product of the roots, this is 2. Product of the roots is 2. So इसको solve करते हैं. We get that minus 3 over 2k is equals to 4, 2 to the 4. So आप इस 2k को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2k को इस तरफ ले आइए, इस 2k को आप उठा के इधर लाइए और इधर लाके मल्टीप्लाई कर दें. So we get minus 3 is equals to 4 multiplied by 2k. So minus 3 will be equal to 4 to the 8k. This is 8k. So this implies that k is equals to minus 3 over 8. So ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई minus 3 over 8. So अब इसको मैं जरा लिख देता हूँ k equal to minus 3 over 8, और this is the answer. k की वैल्यू हमारे पास आ गई. So the question has been solved. Now at the end of the question, I would like to request, this is the value of k. So please subscribe my channel and don't forget to ring the bell. ring के आइकन पर जरूर आप क्लिक करें, घंटी जरूर बजाएं. तो till then, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद.